good evening and welcome everyone. And today we are going to talk about 2025, which are the stocks now which are good at this level, whether and which sector to buy, guys. And why this is important because yes, New Year is coming and no, we have to understand now how the market will be. So let us talk about that in detail. And regarding guys, hope you are doing well. Hope you are able to hear my voice properly. Okay. And guys, in this session, no, we'll talk in detail. But before I go, if you can hear my voice, just type yes in the chat box, guys. Just type yes in the chat box. Okay. Now in this session, let us talk about the market. Now, market, if you see currently situation is that no overall, I don't know where it want to go. वहीं के वहीं खड़ा है. पता नहीं चला यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं. But yes, overall if you see the market no is in dilemma that whether to go up or down, and much more will be depend on the market situation and the quarterly result which is going to come from the next quarter. Of course, FIA buying selling will play a very big role because Trump is going to come into administration from January onwards. So of course he will make a big you can say no change in the market. And every day you have to see Twitter in morning if he has posted some no something tweet on the Twitter now, because at the end of the day uh, his tweet also no makes the market here and there. Lot many things you have to consider when we talk about 2025. So let us talk one by one what we should consider. So when we talk about 2025, as I told you, first of all things you have to keep in mind what will be the Trump administration policy against the various sectors. Okay, which are the sector they will be preferring, and more than that, which are the sector they will be preferring for applying taxes. Okay, tariff. And you see the way he's saying no that he's going to put tariff against China, Mexico, India, Brazil. हर एक कंट्री के साथ वो पंगा ले रहा है. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट ही सेइंग, यू हैव टू export to USA without any taxes and all that. Okay, sorry, import from USA without any taxes and all that. Then only we'll do an export with you without any taxes. And that is what is Trump is all about. He always keep the US first, but this US first philosophy may hurt some of the sector in India. That is what you have to keep in mind, because some of the sector are directly impacted now because they have lot of export to US. So of course there will what we'll do, we'll talk about now one by one sector and we'll go into deep. So let us take one first sector. That the first sector is nothing but the IT sector. You know, IT is one of the strongest sector currently in last one quarter. I think this is the sector now which has done extremely well. Overall, when we talk about this sector, the one of the main reason why it has done extremely well, because US is strong and more than 90% of export is happening to US only. इसलिए क्या हुआ कि because if the US economy is doing well, they'll earn more profitability. If they earn more profitability, of course they will give more contracts for the related to information technology and all that. Okay, upgradation and all that. And that is where Indian IT company will be benefiting a lot. And that is why any one sector which will be the highly benefited will be nothing but the IT sector. And again in IT sector now, whichever companies are having exposure to US maybe having a good no position. Like you can talk about Infosys, TCS or HCL and all that. No, they are having a very almost no a big position towards no USA only. Of course they do it in Europe also. ऐसा नहीं कि export वहाँ नहीं कर रहे, but yes, USA is the major chunk. And that is I know you can see IT is doing well currently, and this may continue. 2024 was very good for IT sector. It may continue for the next year also, 2025. And until the US economy is strong, slowly engaged, Europe is coming up. I think this is the sector which is to be looked out at. And ऐसा मत सोचो कि यार IT कंपनीज बहुत भाग गई, अभी क्या भागेगी. लेकिन देखो, this is just a start. You may see a good rally in 2025 also. Yes, valuation matters. You have to understand about the valuation, kahan jaake ruk raha hai, which companies are trading at what valuation. Of course we have to check that. But other than that, guys, you know, you have to keep a positive bias towards IT.
Okay, so keep this in mind. IT sector. Another sector which speak about is the pharma sector. If you talk about pharma sector, guys, you know, of course we do a lot of expo in pharma sector. And yes, before I go, I forgot to one point to tell you about the IT sector is that USD is getting stronger and stronger. So as the USD getting stronger, you know that most of the revenue of IT sector is getting through USD only. So अगर USD stronger होता है तो of course indirectly their income also will go up. Okay, and the way the US economy is going up and where the other countries are there in including India, little bit slowdown has happened in this quarter and all that now, which is making the currency weak. So as the USD, even if it go up by 4 to 5% in a year, this will directly impact the profitability of IT companies. So that is what is also adding no benefit to the IT companies, because IT companies, honestly speaking, if you go to the most of the countries wherever they so they take the currency is always USD. And that is of course पहले से ऐसा ही है. But yes, over the years also it looks like no the other countries may depreciate. Even RBI governor has done lot of things, like Shashikant Das has done spend trillions of not trillions but billions of dollars no in order to safeguard INR. ओके, सेफगार्ड आएना, लेकिन कब तक सेफगार्ड करेंगे? अपने आप वो फिसलता ही जाएगा. एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड. सो USD INR is a positive thing. Now you may say Trump has told now that he is not going to give a visa. See, earlier, if you remember the Trump administration now, when during the first tenure, he was against the green card and all that. Again, he was against the no the H1 visa. And but after that, no, after Trump administration, during the no Biden administration, no, Indian company adopted with the laws. ओके, तो अभी वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना वो पहले प्रॉब्लम था. So if you ask me that what was the problem earlier, is that no the visa problem. Okay, and now wo shayad nahi hoga. So that is a positive thing which you have to keep in mind, that that is gone away. And again, Trump, if he is going too much anti China, it is beneficial for India. But ऐसे भी नहीं बोल सकते, he is Trump, he can do anything. Okay, but yeah, some of the positive thing like regarding that visa issue and all that will not be a major issue this time. Okay, because now most of the laws is been adapted. And again, Indian IT companies also employ lot many local candidates also from there. So that is a plus one, that is a plus one. So all these thing is working good for IT company. When we talk about the pharma sector, now pharma sector, if you talk about no, most of their export is happening to US and all that. And if the US economy is going up, the consumption of medicine all that goes up, pharma sector will be directly beneficial. No, we are the one of the largest exporter of medicines across the world. So pharma sector also you have to keep in mind. I think that is also one type of safe haven. And you have to see which are the companies which are doing a lot of export, because the companies which are doing a lot of export now will be directly beneficial. And but yes, you have to keep in mind, is there any US FDA issue or not. वो सब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि अगर US FDA इशू होता है तो एक प्रॉब्लम है. Otherwise things will be in a much better control. Just a minute, guys. By the way, guys, no, on today at 8 p.m. we have one session, no, the year end session. So some offer is there. If you want, you can attend that session. I'm giving you the link. Okay, you can attend that session, because now the profit multiplier service, there's a lot of discount is going on currently. So if you want, you can check it out. Yes, Javed Akhtar, Manish Bakshi, so welcome. So pharma sector is another sector which you have to keep in mind. The third sector which you can keep in mind is real estate sector. Real estate sector, another sector done extremely well in last 1 year. If you see in last 1 year, I think most of the real estate sectors, companies in real estate sector has gone up more than 40%. And the reason is lot many changes. But no, the RERA, that is Real Estate Regulation Act, what
income, no, it actually help to transfer from the unorganized sector to an organized sector. इसलिए ना रियल एस्टेट को बहुत फायदा हुआ, एंड दैट्स व्हाई big companies like DLF, no, Macrotech, and no, Shoba and all that, Obora and all that are beneficially. Also, guys, the demand of the luxurious houses has gone up a lot. ओके अभी काफी लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं या घर से बिजनेस चला रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा घर चाहिए, एक रूम स्पेसिफिक चाहिए, बड़ा घर चाहिए. That is what is also helping. Even the demand of office, I think it is one of the highest, okay, in last few years. So across real estate, I think in last decade this is one of the best year of real estate sector, and it has been said that in next year also 2025 this sector may do well. Now, if the interest rate cut may come after the February, I think this interest rate cut will be beneficiary for the real estate sector, because if, as the interest rate in the on the loan goes down, of course the demand is going to go. So yes, real estate sector one another sector which you have to keep in mind. I know lot of company has done well, but I think यहाँ से भी एक अच्छा अपमूव आ सकता है. Okay, and of course, regarding the state level also, if you see the last Maharashtra election ke baad, no, suddenly real estate companies of Maharashtra gone up. So lot many policy changes and no, lot many at the state level changes are happening, which is helping the real estate sector. Interest rate cut again, RERA. I think these are some of the no positive points on which is going to benefit the real estate sector from here. So that is also a good sector to be in. The fourth sector which I want to talk about is the hotel and hotel business. टूरिज्म भी है, लेकिन होटल बिजनेस में ज़्यादा फोकस करेंगे. बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. अगेन नो द टूरिज्म हैज गॉन अप अ लॉट एटलीस्ट दिस क्वार्टर, the October to December, because of the festival season, Christmas and Diwali and all that. No, suddenly you see most of the hotels are pre-booked completely. अगेन अभी क्या हो रहा है कि लोग टूरिज्म में जाते हैं, लेकिन काफी लोग वो नाइट ओवर स्टे करना चाहते हैं फैमिली के साथ अच्छी होटल में, 5 स्टार होटल में. So that is also helping all these hotels. Okay, so even if you see lot many stocks related to hotel businesses like Indian Hotel, EIH, or yeah, Lemon Tree, Sami, all these companies has done extremely well. So yes, hotel business is also one thing you have to keep in mind. See, as the economy goes up, no, कोविड के टाइम प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी तो काफी लोग अभी तो टूर टूर कर रहे हैं, तो अभी वो प्रॉब्लम नहीं है. और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, दिस टाइप ऑफ revenge tourism, or you can say no, okay, one night stay at any hotel, okay, and all that is picking up, and that's why hotel business is really doing well. Indian hotels has done extremely well, और वो लोग भी री इन्वेस्ट काफी कर रहे हैं. So that is also helping no, so many hotel businesses that over the time, no, they are reinvesting, and no, again the quality of hotels here is increasing a lot, means much better compared to earlier. So hotel business is also one business, no, which you have to keep in mind. The other sector, if you ask me, which will be the sector, will be the capital market sector. BSE, NSE, MCX, CAM, CDSL. No, all these platform businesses, even the brokerage houses like Motilal Oswal, Angel, okay, Anand Rathi, no, wealth management. No, these intermediaries will have a very good business कमिंग फ्रॉम हियर ऑल्सो, बिकॉज देखो मार्केट में इतना ट्रेडिंग हो रहा है. अभी तो कितने हैं, सी, ये 5 करोड़ या 6 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, वो आगे जाके 15-20 करोड़ मिनिमम होंगे ना. तो एट द एंड ऑफ द डे इंटरमीडिएट्स विल बी बेनिफिशियली. इवन जिस तरह से इफ यू सी 7 to 8% only retail investors are investing in India. If you see USA, it is more than 50%. In Europe is more than 60%. In China also it is more than 30 to 35%. तो अपना तो बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है. तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी ये जो सब प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है ना, they may do well, but yes, you have to keep in mind all the stock has gone up a lot, but the scope is too big to ignore. स्कोप बहुत ही बड़ा है,
और यहाँ से भी ना काफी कहते हैं ना कि यहाँ से यू कैन से ग्रोथ इज देयर, एंड अगेन मल्टी ईयर ग्रोथ इज देयर. The only thing is, are you picking the right stocks and staying investing? Because at the end of the day, that is the most important thing. इंटरमीडिएट्स का फायदा क्या है इन लोगों का? अभी तो अगर हम लोग इंटरमीडिएट्स की बात करें ना, सो दे हैव अ स्पेसिफिक मोड. अगेन इतनी जल्दी लाइसेंस नहीं मिलता आपको इन सब कंपनीज का, सॉरी इन सब सेक्टर्स का. ओके, तो दैट इज आल्सो वन थिंग. सो ओवरऑल आई थिंक दिस sector may do may do extremely well even for the next few years also. So you should not ignore this sector. Capital market sector is one of a very very important sector to be keep in mind in 2025 and from here all 2025 onwards also. Let me take the sixth sector. If you ask me, the sixth sector is the new age companies. न्यू एज कंपनीज यानी पहले तो हम लोग बोलते थे यार ये सब जोमेटो या नो जस्ट डायल एंड नो पीबी पॉलिसी बस एंड ऑल दैट सब प्रॉफिट नहीं बना रही है, ये है वो है. नाउ यू सी व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ these companies are doing. You see Swiggy, the day it listed, it has done extremely well. So these internet companies, new age companies, is taking market by storm. अगर आप देखो तो इनका जो शेयर है ओवरऑल मार्केट में मे बी 1 और 2% है अभी. ये आगे अगर आप अगर यूएसए की बात करो ना, तो वहां 15 से 20% उनका मार्केट शेयर होता है न्यू एज कंपनीज का. और मार्केट शेयर इज वेरी वेरी लेस. लेकिन हाँ, आपको देखना है कि इसमें से कौन से कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी करेगी. अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देन इट में डू वेल. बट यस, इफ यू सी ऑल दिस कंपनीज हैव अ मैसिव ग्रोथ. अगेन इनका स्कोप बहुत बड़ा है. इफ यू सी स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ओके, ऑल दिस कंपनीज, बिग बास्केट, नो मार्केट इतना बड़ा है ना कि सबके लिए जगह है. सबके लिए जगह है, डिमांड ही इतनी है. तो नो वी एट द एंड, is the company is able to make profitability out of this? That is the important question you have to ask. Correct? Because overall, if you ask me, these are the sectors which one has to focus. Don't ignore this sector. काफी लोग आप बोलोगे यार तो अपन इसमें तो प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ये नहीं है वो नहीं, लेकिन जब बनेगा ना, बड़ा बनेगा, तगड़ा बनेगा. अगेन इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छी है. सो ऑनेस्टली, guys, we do provide us services. We also focuses a lot in giving recommendation, all these new age companies, and I am very very positive on all this. In even our stock recommendation services also, we have given few new age companies which has done extremely well. Okay guys, by the way, just to repeat, if you want guys, you can attend our today 8 o'clock session where our I'm going to give you an exciting offer on our profit multiplier service. That is our stock recommendation service. I'm just giving you in a link. You can attend that. It is at 8 p.m. Okay. So overall guys, ये न्यू एज कंपनीज ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ से भी मुझे तो लग रहा है कि काफी अच्छा परफॉर्म करेगी. सी, वी आर करंटली अ डेवलपिंग कंट्री. फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू बी इन अ डेवलप कंट्रीज. ओके, तो यहाँ से जो जो डेवलप कंट्रीज में हो रहा है ना, वो यहाँ भी होगा. तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. तो इसलिए, और काफी सारी न्यू एज कंपनीज दे आर गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर. सी, आईपीओ मार्केट. आईपीओ मार्केट में दिस ईयर इट वाज अराउंड 1.3 लाख करोड़ ऑफ फंड रेजिंग डन. You know what is going to happen in 2025? Almost 2 lakh crore. Okay, we are second number after USA in fundraising through IPO. हम लोग ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है. ओके, तो बहुत सारी कंपनीज आएंगी आईपीओ में, अच्छी अच्छी कंपनीज आएगी. बहुत सारे स्टॉक्स है जहां आपको रिटर्न मिलेगा. ऐसा नहीं कि कुछ ही स्टॉक्स है. आपको आंखें खुली रखनी है और देखना है कि कौन से स्टॉक अच्छा है. इवन लाइक सो मेनी यार, एवरी डे आईपीओ कमिंग है. तीन चार आईपीओ आते हैं. अभी तो नाम भी याद नहीं रहते. इवन माय टीम, व्हेन वी आर गिविंग दैट आईपीओ suggestions, whether to apply or not, they are also saying sir every day 4 to 5 IPO is coming. So yes, बहुत मार्केट बड़ा होते जा रहा है. more than 7,000 stocks are there. Enough opportunities there. It is just you have to identify good opportunities.
So all these sectors which is given, I spoken about IT, then real estate, then new age companies, hotels, और कौन सा बोला था मैंने, नाम भी भूल गया मैं आई थिंक 4 और 5 सेक्टर्स की मैंने बात की थी. कैपिटल मार्केट, ओके, और एक सेक्टर भी बोला था, मैं भूल गया यार. ओके, बट यस, एटलीस्ट दिस 5 सेक्टर आई स्पोकन अबाउट. एक बार याद आता है तो मैं बोल दूंगा. तो दिस आर द सेक्टर्स यू कीप इन माइंड. यस, अनदर वन सेक्टर विच आई फॉरगॉट टू टेल यू, द बैंकिंग सेक्टर. व्हाई? See, I feel that MFI lending issue, microfinance lending issue, is at the bottom. अभी ये कॉन्ट्रा कॉल है, but like IndusInd Bank told that he is selling complete its stake in the MFI lending. Okay, now all these thing, ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है. IndusInd बैंक में देख लेता हूँ आज क्या हुआ. 2% ही बढ़ा है. ओके, but most of the companies has done lot of provision on MFI lending and all that already. 90 और 95% प्रोविजन कर लिया. मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक दैट problem is resolved, and from here now there may be a recovery from here. So, and banking overall is in a good shape. MFI lending was an issue at a small banks level, not at a large bank level. ओके, तो वहां वहां कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जो प्रॉब्लम थी वो छोटी बैंक्स में थी. यहाँ से ऐसा लग रहा है कि वो भी अभी नहीं रहेगी क्योंकि इनफ प्रोविजन कर चुके. तो भी देखना क्या होगा. बट आई थिंक दिस आर ऑल्सो, बैंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्टर विच one has to keep in mind when you are talking about no what are the prospects. And still I think private banks can go much more no ahead from here. They are well capitalized, there is a lot of growth there, and I think things will be much better from here. Okay, so banking also one sector. Yes, I forgot one sector to tell you was the pharma. Second sector I spoken about the pharma. So these are the 7 sectors I think you have to keep in mind. Okay, when you are talking about the 2025, 2025 will be an exciting year, guys. और अब बोलोगे क्या रिटर्न वैसा मिलेगा जैसे हमें 2024 में मिला? थोड़े चांसेस कम है. मे बी नॉर्मलाइज रिटर्न होगा, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ है कि Q3 अभी जो आ रहा है, स्टिल इट मे नॉट बी अ ग्रेट क्वार्टर, और Q4 से रिकवरी चालू होगी. सो Q1, Q2 ऑफ फाइनेंशियल 25 विल बी मच बेटर. सो रिकवरी में थोड़ी टाइम लगेगी. तो इस बार का शायद इस साल का रिटर्न इतना ग्रेट ना हो जितना 2024 में था. 2024 वाज वन ऑफ द बेस्ट ईयर. ओके, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला. लेकिन 2025 में ना आई थिंक वी हैव टू ना, तो थोड़ा आपको थोड़ा ध्यान से करना है. मे नॉट बी सो मच ऑफ गुड रिटर्न कंपेयर टू 2024. सो बट यस, नॉर्मलाइज रिटर्न होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे. Then also we never know, some surprises are there and suddenly we may shoot up. And no, if the quarterly result starts coming very good, I think things may be settling down there also. Okay, so this is what I wanted to tell you about the stocks and sectors. Like now let me talk about the some of the sectors which I feel no, still they are struggling and it will take time to recover. So many of the sectors like still chemical sector is struggling a lot. पता नहीं कब ऊपर आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लग रहा है. जिस तरह से 1-2 क्वार्टर और लगेंगे ऊपर आने में. Even though the USA is coming up, they are doing most of the export to US and Europe. Still, no, that visibility is not that chemical sector is coming up. So chemical sector may take a little bit of time. Another sector may take time is the automobile companies. Automobile companies, no, you can say no, that is also in a issue. ऑटोमोबाइल कंपनीज में प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि डिमांड ही नहीं है रूरल और अर्बन एरिया में. और वो क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है. सो एज इन्फ्लेशन इज हाई, द डिमांड इज नॉट सो ग्रेट, एंड आई थिंक इट मे टेक सम टाइम टू फॉर द रिकवरी इन डिमांड. सो that also you have to keep in mind. Even for the FMCG sector, same thing. जब तक इन्फ्लेशन डाउन नहीं आएगा, डिमांड रिकवरी नहीं आएगी.
अब इन्फ्लेशन डाउन कब आएगा? मे बी जनवरी फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आना चालू करे तो अच्छा है, अदरवाइज मे बी फेब्रुअरी ऑल्सो RBI may not cut the interest rate. So डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट रेट कट, FMCG में रिकवरी आएगी। FMCG भी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया, द रीजन इज सेम कि नो बिकॉज ऑफ द हाई इन्फ्लेशन एंड द लो वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही उनका कम है, एंड दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस बाय द FMCG. Okay, so these are some of the sector may take time. If you have any question, you can ask me, not a problem. Talking about railway, defense, ऑल दैट, डिफेंस में एक अच्छी रिकवरी आ रही है, रेलवे में स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगी. सॉरी गाइस, आई हैव सम कफ इशू, सो रनिंग नो सॉरी. सो रेलवे में धीरे धीरे आएगी रिकवरी, बट आई थिंक डिफेंस इज रिकवरिंग गुड. PSU विल टेक सम टाइम, PSU विल टेक सम टाइम, इतने जल्दी रिकवर नहीं होंगे, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत है. अदरवाइज आई थिंक डिफेंस में रिकवर फास्ट, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिल रहे हैं, एंड रेलवे धीरे धीरे रिकवर हो सकता है. ओके, मनीष बख्शी, वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और शेयर्स? मनीष देखो, मेरे हिसाब से तो शेयर्स आपको ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं अच्छी तरह से, लेकिन आप मिक्स रखिए. आप अगर आप चाहो तो 40% म्यूचुअल फंड एंड 60% इक्विटी रख सकते हो. उस तरह से भी आप जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है. सो यू कैन हैव अ बैलेंस ऑफ बोथ. यू कैन ट्राई इंडेक्स फंड्स आल्सो. इंडेक्स फंड्स में फायदा ये होता है कि डायरेक्टली ETF होते हैं ना जे, इंडेक्स फंड नहीं लेके आप चलो ETF बाय कर सकते हो, डायरेक्ट ETF बाय कीजिए. निफ्टी ETF होता है, बैंकिंग इंडेक्स का ETF होता है, सभी अलग अलग इंडाइसेस का ETF होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो. 60-40 और उस तरह से आप कर सकते हो. सर अभी इंडिगो ले सकते हैं, कैन वी डू एनीथिंग? वेल, इंडिगो ओवरऑल इट्स अ गुड कंपनी, ऑनेस्टली बहुत ही अच्छी कंपनी है, एंड it is one of the leader, and honestly 67% मार्केट शेयर ऑलरेडी इंडिगो के पास है. द नेक्स्ट कॉम्पिटिटर एयर इंडिया इज फार फार बिहाइंड दैट. अभी कोई है ही नहीं यार इंडिगो को कंपटीशन देने के लिए. और यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सिचुएशन है उनकी, नो आई थिंक यहाँ से भी रिकवरी ज़्यादा होगी, एंड दे में कैप्चर गुड मार्केट, और उनके मोर एंड मोर इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगे. आई थिंक इंडिगो इज इन अ ग्रीन पिच. यस, लास्ट क्वार्टर वन ऑफ था, but overall if I see, I think things is much better for Indigo from here also. See all these stocks, no, I think Indigo, agar baat kare na, this was one of the stock which has proven wrong to all the other, you can say, no, investor. They were saying no that yeah, airlines company में invest नहीं करना चाहिए, but if you see airlines company has done extremely well, especially Indigo, it's an exception. बहुत ही कम कंपनी इस तरह से नो यू कैन से दैट नो कैन परफॉर्म वेल. सो कीप दिस इन माइंड गाइस. बाय द वे गाइस, इफ यू आर नॉट enrolled to our YouTube or Telegram channel, by the way guys, yeah, I forgot to tell you, please like this video without fail. Okay, and if you like the content, please click the like button below it, below the video, it is there. And I'm just giving you the link of our Telegram channel and Twitter channel. If you want, you can enroll to that also. Any question you have, you can put it. And as I told you guys, at 8 p.m we are having a session, a live session, where there is an no Christmas and New Year offer is going on. If you want, you can attend that session. Our session is there on the profit multiplier services. Okay, सर एक्साइड और अमराजा 2025 में रिकवर होगा? स्टॉक दोनों अच्छे हैं, कैन डू एनीथिंग. स्टॉक ऑनेस्टली अच्छे हैं, सो रखिए आप. आई थिंक देयर आर चांसेस, इफ EV विल रिकवर, this company is going to recover, but it will take some time. But I think nothing wrong in these companies. Even prospects are good, even the companies, whatever new contracts they are happening, that is also good. So nothing wrong in the companies, guys. You can hold it. Okay,
Then Amit, what about Tata Motors? Tata Motors will take some time as and when no overall you can say the China may recover. No, China जैसे जैसे recovery आएगी, Tata Motors में भी recovery आएगी, because Land Rover and Jaguar their main models are in China, so China में थोड़ा time लगेगा, so you have to wait for that. Things will be good, but it will take some time, and that is what you have to keep in mind. Uh, so what about the water cycling recycling sector? वाटर रिसाइकलिंग नहीं, वाटर वाटर मैनेजमेंट की बात करो तो देन दैट इज अ शाजी, इट्स अ वेरी वेरी गुड सेक्टर. वाबाग एक नंबर वन है उसमें, लेकिन थोड़ा वेट कर लो. स्टिल इट्स अ इमर्जिंग सेक्टर. स्टिल आई हैव नॉट गॉन थ्रू इन डिटेल, इवन आई टोल्ड माय रिसर्च टीम आल्सो गो थ्रू इट, बट यस, एक्साइटिंग सेक्टर है. अभी अभी आप आइज रखिए, बट मैं इस पे ज्यादा मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने डीप में देखा नहीं है वो. राकेश, यस यस, वी आर लाइव, वी आर लाइव. ओके. वेल, इन्फोसिस गिव बोनस, अब वो तो पता नहीं है उदय के वो बोनस देंगे कि नहीं देंगे, बट अभी जैसे यूएस रिकवर हो रहा है ना, सो आई थिंक फॉर देम आल्सो इट इज गुड. फॉर देम आल्सो इट इज वेरी वेरी गुड करंटली सिचुएशन. सर कौन सा सेक्टर बहुत अच्छा लगता है 225? मैंने एक्चुअली 4-5 सेक्टर की बात करें, जैसे आईटी, फार्मा सॉलिड है क्योंकि यूएस रिकवर कर रहा है. कैपिटल मार्केट की बात की, न्यू एज कंपनीज की बात की, ठीक है, होटल बिजनेस की बात की, तो ये कुछ सेक्टर मुझे अच्छे लग रहे हैं. ओके. राकेश, व्हाट अबाउट सुंदर मैगजीन? अब सुंदर मैगजीन का मुझे पता नहीं है राकेश, सो आई नॉट एबल टू टॉक अबाउट दैट. मॉइल, मॉइल ओवरऑल देखो यह मेटल कंपनी है, और आप ठीक है आप डालो. एक टाइप का वो कहते हैं ना कि स्विंग होता है, ऊपर के लेवल पे आप बेचो, नीचे के लेवल पे आप बाय करो, दैट यू कैन डू इट, बट आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव फॉर मॉइल ओवर अ लॉन्ग टर्म. No, as I told you, no, your entry and exit should be very, very is very, very important if you want to be there in that stock. Sun Pharma versus Natco Pharma, both the stocks are good. Nothing wrong in that, and I think pharma sector is in a good position currently. I think if you have these two stocks now, you should hold it. Okay. And जैसे मैंने बोला ना कि यूएस जैसे रिकवरी होगा, आई थिंक फार्मा सेक्टर विल बी इन अ स्वीट स्पॉट. So keep this in mind, guys. Okay. Overall also, guys, maybe this quarter may not be so great. So जनवरी फरवरी मार्च में जो रिजल्ट आएंगे इतने नहीं होंगे, लेकिन बाद में बहुत लग रहा है कि काफी इंप्रूवमेंट आएगा. तो उस इंप्रूवमेंट में ना काफी सारे स्टॉक्स रिकवर करेंगे. सो थोड़ा लॉन्गर होराइजन रखो आप स्टॉक्स के लिए, होल्ड के लिए. आई थिंक थिंग्स विल बी मच मच बेटर आफ्टरवर्ड्स. ठीक है. बट गाइस, इफ यू आर जस्ट जॉइन, आई जस्ट नो, मैंने स्टार्टिंग के 25 मिनट्स में मैंने बोला है कौन से सेक्टर मुझे अच्छे लगे. प्लीज फोकस ऑन दैट सेक्टर. इफ यू फोकस ऑन ओनली दैट सेक्टर्स आल्सो, दिस इज, यू आर ओके. ओके. 2025 में आई थिंक दिस आर द सेक्टर्स विच मे डू वेल, एंड ओवरऑल उसमें ही स्टॉक्स आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है. एनटीपीसी विल टेक सम टाइम टू रिकवर बिकॉज द पावर सेक्टर में थोड़ा प्रॉब्लम है, एंड पावर सेक्टर में रिकवरी में भी स्लो हो रही है बिकॉज renewable sector is not honestly performing currently, and that is what is bringing the complete sector down. Okay. ठीक है गाइस, तो चले यहाँ तक रखते हैं. सो थैंक यू मच फॉर जॉइनिंग गाइस. 8 p.m. we have a live session, guys, and as I told you guys, again I am sending you the link. Okay, if you want you can join it at 8 p.m. without fail. ठीक है. कोचिंग शिपयार्ड ओवरऑल आपको वेट करना पड़ेगा राकेश. रिकवरी होगी, स्लोली एंड ग्रेजुअली होगी, बट रखो अभी, अगर है तो आपके पास रखो. ठीक है. लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी में.
टाटा स्टील ऑफ कोर्स साइक्लिकल है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टाटा स्टील एक लेवल पे आना है। आई थिंक यू शुड गेट आउट मे बी 10-20% हायर, और नीचे के लेवल पे वापस एंटर करना। ये ऐसा ही रहेगा, वो ऐसा नहीं जाने वाला है। 45 डिग्री में मुझे नहीं लग रहा है अभी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है। ऑफ कोर्स मेटल सेक्टर इज इन फोकस, बट नो, एज इट इज साइक्लिकल यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल हियर। ओके, ठीक है guys, so thank you very much. You can check this video again afterwards if you missed that sector. So hope you enjoyed the session. Yes, then just type V for value and do like this video without fail. Okay, do like this and do join our Telegram and YouTube channel, Twitter channel also. Okay, ठीक है, चले guys, I'll see you at 8 p.m. ठीक है।